morning once again. This is session 3 of chapter 3. We are going to cover chapter 3 the way we did chapter 2 in 2 parts. We will do chapter 3 also in 2 parts. What is the chapter all about? It is about social institutions, continuity and change. So this is part 1 of the chapter. We saw in the last session, we spoke about dynamics of population, structure of population. We looked at how the population constituents change in terms of gender, in terms of region, through migration, and what are the issues that come up through population, and why it is very important to understand the population of any place, to understand the social structure and how the social structure impacts quite a few things. Because the governance, if you have got to take care of welfare of people and create schemes and policies to impact, we definitely need to know the entire structure and dynamics of population. That's what we invested time in the last 2 sessions. So, population is much more than those numbers, the statistics. Yeah? Society is a collection of distinct, very important, interlinked classes and communities of various kinds. Okay? So, when you're talking about society, we need to understand these classes, these communities, and how they are interlinked, and why are they distinct and how are they distinct. So we will invest time in this session looking at these dimensions and how these communities and classes are sustained and regulated by social institutions and the relationships that exist in the social institutions, and why these social institutions are important. What role do they play? So we'll look at that too. So what are we going to cover? This chapter 3 covers 3 significant institutions, 3 significant social structures. Number 1 is caste. Number 2 is tribes. Number 3 is the family. Yeah, all 3 we will cover. But in the first part of the session, we will focus on understanding the caste system. Are you all there? Ideally, when you are attending this session, you should keep your textbooks also with you, so that when you are listening and watching, you can browse through the textbooks. So the first thing to understand, is the caste system static? Has it been the same over hundreds of years? As what we experience today, was that similar system existed in the past? Are there any differences? Caste is one of the ancient, old social institution. Yeah? Why did it emerge? Is there a different meaning vis-a-vis earlier and today? Has it taken a different meaning? Very interesting. So let's look at caste in the past. Similar systems do exist in the whole world. The classification and stratification exists in the whole world. But this caste system, as we follow, is very unique to the subcontinent, because the pre-independence, the whole subcontinent was one, though we have divided into multiple states that follow multiple religions, predominantly religions, etc. But as a caste system, the whole subcontinent has got a very unique system. Interestingly, this caste system has had roots in Hindu society. So it was innate to Hindu system.
But as we progress over last 100 years, because of the coexistence of people, etc., over these hundreds of years, the caste system has gone deeper into many non-Hindu communities. So we see today, as we exist, Muslims have caste system, Sikhs have caste system, Christians have caste system. So the caste system got entrenched into followers of every faith, followers of every religion. So the four divisions are Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. So these are four divisions of Varna. Brahmana, the set of people who usually do prayers, rituals, etc., they take care of the duties towards godliness, duties towards the well-being of the society in terms of praying to God, etc., is taken care of by Brahmana. Also, they are considered to be well educated and informed of the ancient scriptures. These four divisions broadly take care of four significant areas or of the society that for a society to progress or exist or flourish. Yeah? Then you have Kshatriya, because every society needs to be secure. So Kshatriyas form that particular group or community or Varna that takes care of the physical security of the communities or society and so on and so forth. For any society to thrive, we need economic activities to happen. So Vaishyas take care of these economic activities. And if the society has to flourish, then somebody has to take care of resources, with agri resources, mineral resources, and all kinds of activities that work towards making resources productive, and that is taken care of Shudras. That's how the Varna system came into existence, or the whole Varna system broadly classifies the social fabric into these four divisions. Then over the time, realize there is a migration of foreigners, migration of slaves, outcasts, all happen. So they created the fifth division called Panchamas. So four divisions of Varnas, then the fifth one is called Panchama. As the name also suggests, it's the fifth one. Now, broadly, Varna system gives the framework for any classification of the social fabric across the country. So it is an aggregative classification system across the country or all across the subcontinent. Now what is Jati then? So while Varna gives the broad framework of the social classification across the country, the Jati is a generic term for any species. Okay? So Jati as a word originated for classification of objects, plants, animals, human beings. Yeah? So even when you look at a tree, which jati, kaun si jati ki hai ye ped, kaun si jati ki ye pashu hai. So you know that, for example, cat is a particular species. So the tiger is a cat, lion is a cat, and a domestic cat also is a cat. You know? So
that's a generic term used, and jati is also used for classification of human beings. Okay, that's where jati comes. Now the term jati has become prevalent and it is commonly used for caste. So hardly you speak about varna. Why? Because from region to region, place to place, there is a different set of classification that has come into being. So the classification or a hierarchy has come into place, and this is this. For example, if you go to Andhra, there is certain kind of classifications. If you go to Punjab, there is certain kind of classifications. So Varna, when it gives a framework for broader classification across the country, Jati helps us to localize the classifications that are prevalent or that is existing in the social fabric of a particular state, particular region or particular community. So we started using Jati more commonly than Varna. Hope you understand what I'm trying to say. Okay? Then where do you go from here? After understanding Varna and Jati. This Varna system is a very ancient system. This has been in vogue. It is being used. 3000 साल से वर्ना सिस्टम प्रचलित में है, इसको लोग फॉलो करते हैं या ये आम है, लोगों को दिखता है, लोग अपना in terms of usage, in terms of reference, in terms of understanding, the Varna system is 3000 years old. The Vedic period that was in the first 1000 years, from 900 BC to 500 BC, the Varna system of 4 divisions was the only one which everybody was aware. So they are classified either as a Brahmanas or Kshatriyas or Vaishyas or Shudras. There were no sub-classification, sub-classification, their regionalization, localization did not exist. For the first almost 1000 years, that did not exist. But over the time, they came into being. Also, this Varna system was not rigid. It means it is not determined by birth. ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण फैमिली में पैदा होता है वो जिंदगी भर ब्राह्मण रहेगा, नहीं. It is not distinct. It is based on the kind of work you do. आप किस तरह के काम में आप मग्न होते हो और किस तरह काम आप बढ़िया कर सकते हो, उस काम के हिसाब से आपका वर्णा तय किया जाता है. So it is not a rigid system. There was mobility across divisions. So somebody born in Brahman can become Kshatriya. अगर बोला कि परशुराम जो है Lord Parshuram, similarly, if he becomes a Kshatriya and he fights wars, he gets into security of the village. अगर वो युद्ध में जाने की इच्छा रखते हैं और उसमें प्रावीणता हासिल करते हैं, तो वो क्षत्रिय बन जाते हैं, even though born as Brahmins. So that mobility existed in the first almost 1000 years. Then came the current classification, or the rigidity came into being post that Vedic period, or post first 900 to 1000 years. After that, it started. Because scriptures evolved. In the scriptures, there have been these such statements that caste is determined by birth and cannot change. It means जो ब्राह्मण जन्म में पैदा होता है, जन्म लेता है ब्राह्मण के घर में, वो जिंदगी भर ब्राह्मण ही रहेगा.
सो ये बहुत बाद में, 1000 साल के बाद आया है ये. So it started becoming very rigid. पत्थर पे लकीर जो कहते हैं. Okay? So membership became very strict rules. And it also evolved. क्या हुआ? जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण से ही शादी कर सकता है. Similarly, people born in a particular varna can marry only person from that particular varna. Okay? Similarly, food. Each caste or varna had such food practices and they are expected to follow making that kind of food and eating that kind of food, and sharing of food was not allowed. So a strict lakir sab खींच दी गई. Okay? So the strict rules came into being across the varnas. Slowly, caste system started evolving into a hierarchy based on perhaps the kind of work they did, whatever kind of work they did. Then social strata started happening, high caste, low caste started happening, and every person of a particular caste is somewhere in that hierarchy. Yeah, there is a hierarchy. Okay, and this hierarchy may vary from region to region. As I said, from state to state, region to region, location to location, the constituents of hierarchy and the rank within the hierarchy started changing. That's what you see now when people in a particular state of, say, Maharashtra are fighting to be included in the scheduled class, somebody is fighting to be in scheduled tribe. So everybody wants to be included in that rank and file of the hierarchy system. These things started after the first 1,000 years as the society started evolving, perhaps more so for governance, organization. That was the intention before, but it has come to something else today. We'll talk about those things. Okay? So there is segmental organization. So कास्ट है, उसमें सब कास्ट है, सब कास्ट में सब कास्ट है, उसमें भी हायरार्की है, उसमें भी कौन आगे कौन पीछे, ये सब जो है पिछले 2000 साल में ये सब evolve होता आ रहा है. Okay? And all of these castes are linked to occupations. Okay? For example, cobbler, chamar, और द फिशरमैन, मछली पकड़ने वाला. सो ये सब जो है कास्ट को काम से जोड़ दिया गया है एज एवोल्यूशन में. तो अगर वो नदी पार करा रहा है तो वो तो बोटमैन ही है. सो इट हैज बिकम ए कास्ट. सो द ऑक्यूपेशन एंड कास्ट started getting tightly linked. Okay? And it became a hereditary also. It means a cobbler's son will become cobbler. A washerman's son will become only washerman. ये सब जो है the stratification होने लगा है, बांट दी गई है सोसाइटी को. और so occupation can be pursued by only particular category. Okay? अगर चमार है तो वो जूता ही करेगा बस, दोनों तरफ से. अगर जूता कर रहा है तो वो चमार है, या तुम चमार हो तो तुम जूता ही टिक करोगे. ऐसा सब क्लासिफिकेशन होने लगा जो कि पहले 1000 साल में नहीं था. या सोसाइटी अपने आप को बांट बूंट के सब ऐसा सा करके अब सिचुएशन इस तरह पैदा हो गया, इस तरह आ गया ओवर द लास्ट about 1800-1900 years. Why I am saying 1800-1900 years? Because in the last 200-300 years, lot of changes happening because of technology, governance, all those started coming. We will look into these very closely. But for almost 1500-1600 years, this kind of tightly tight boxed system got evolved. So rigidity came into being, and all of them quoted
from scriptures. भाई वहां किताबों में लिखा है, ओके, वेदास में लिखा है, इधर लिखा है, उधर, पूरी कहानी सुना के ऐसा डब्बा डुब्बा बना दिए. Actually those scriptures all evolved only after practicing and people have documented it. Okay, so let us see how these caste rules were regarded. ये rules जो हैं, हर एक कास्ट का जो लकीर का फकीर वाली रूल्स जो आई हैं, वो कैसा इवॉल्व हुआ, वो कैसे, ओके. बहुत पहले ये रूल्स जो थी वो इट वाज नॉट प्रैक्टिस्ड इन टोटो. रूल बदले जाते हैं, रूल इस्तेमाल होता है, नहीं होता है. पहले ऐसा होता था, जब एनीबडी कुड ट्रैवल फ्रॉम वन वर्ना टू अदर वर्ना, द रूल्स ऑल्सो डिड नॉट मैटर. Yeah, the rules involved restrictions. So what are the restrictions? And restrictions of various kinds, as we already seen. Okay, but these restrictions benefited some caste and did not benefit other castes. So they were not an equal system. So some rules were applied for some and some rules did not get applied for somebody else. As said, these rules and applications of rules got defined by birth, okay, and it is impossible, या और एक बार पैदा हुआ है किसी कास्ट में, बस भुगतते रहो जिंदगी भर. So impossible to change in your lifetime, life circumstances. So the upper caste got higher status. For example, Brahmins, Kshatriyas, they are classified higher and the status is higher, upper caste and status is higher. And lower caste got lower status in the scheme of things, the way things evolved. There are two sets of principles that govern the whole caste system. The first principle is based on difference and separation. Yeah, interestingly, the first principle is difference and separation. Every caste is different. Every caste is separate from one another. No caste by its practices, processes, rituals, etc. are similar. Yeah. For example, rules for food, rules for marriage, rules for interaction, rules for occupation, all of them are different for every caste. Okay. Then second set of principles is holism and hierarchy. Interestingly, when each caste is different from other caste, each caste cannot live in isolation. Very interesting. Even like occupation, the occupation they are limited to only one part of it. Until unless other castes do not come together to form the whole, even one caste will not be able to exist. For example, the washerman, the boatman, है ना? अगर बाकी कास्ट और सिस्टम पूरे सिस्टम में नहीं है तो ये चमार को भी कोई काम नहीं मिलेगा, बोटमैन को भी कोई काम नहीं मिलेगा. सो ईच कास्ट इज डिफरेंट एंड सेपरेट, but in the bigger scheme of things, they all are part of a whole, larger whole. That's how it is defined. So no individual, no caste can exist in isolation. Yeah, it is not possible. And all these castes within the whole exist in a hierarchy. हर एक कास्ट का अपना जगह है, हर एक जाति का अपना जगह है. सब रैंकिंग भी की गई है, ये इससे बड़ा है, ये उससे छोटा. अब इस जमाने में तो जानते ही है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, और शेड्यूल ट्राइब में भी लड़ाई होती है, तू उधर है मैं इधर हूं. ओके, सो देयर इज अ हायरार्की, देयर इज अ रैंकिंग दैट इवॉल्व्ड. वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट.
How did the ranking evolve? It evolved based on purity, sacredness. जो इंसान पूजा करता है, सब वो करता है, वो भगवान के पास है, तो वो हायर हायरार्की में पहुंच गया. जो बंदा जमीन पे काम करता है, जमीन की चीजें करता है, वो नीचे पहुंच गया. सो हायरार्की प्यूरिटी पे आ गई है, शुद्धता पे आ गई है. तुम शुद्ध हो, तुम ना शुद्ध हो, अशुद्ध हो. ओके. एंड सिमिलरली people who cause pollution, or people who work in systems and processes that pollute, they are the farthest from. तू बंगी है, तू ऐसा काम करता है, तू बंगी है, तू क्लीन ही नहीं है, मतलब शुद्ध ही नहीं हो, तो तुम्हारा कास्ट वो नीचे हो गया है. सो ऐसा सिस्टम एवॉल्व हो गया है, अनफॉर्चुनेटली बेस्ड ऑन प्यूरिटी एंड पोल्यूशन. So the purity always got a higher status. जो बंदा शुद्धता की चीजें पे काम करता है वो ऊंचा है, बाकी सब उसके नीचे. जो भगवान के पास है, जो मंदिर में काम करता है, जो पूजा पुनस्कार काम करता है, वो सबसे ऊंचा है. ऐसा सिस्टम पैदा हो गया है. और जिसके पास, बिकॉज जिसके पास पावर है, पैसा की पावर है, मिलिट्री की पावर है, सो जिसके पास जो पावर है, हायर लेवल ऑफ पावर है, वो हायर स्टेटस है सोसाइटी में. भगवान के इर्द गिर्द जो रहता है वो हाईएस्ट है, उसके बाद क्षत्रियास है या मिलिट्री है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड इनके पास पावर ज्यादा है, स्टेटस भी ज्यादा है. Those defeated in the war get lower status. अगर कोई किसी युद्ध में हार पाया तो उसका स्टेटस नीचे हो जाता है, वो नीचे डिप्रमोशन हो जाता है उसका. So they get into lower status. And in the whole scheme of things, castes became complementary, not competing. Okay? So they don't compete. Each one, because society को सबकी जरूरत है, पुजारी की भी जरूरत है, लठमार और उसकी भी जरूरत है, एक चमार की भी जरूरत है, एक सब एवरी. सो ऑल ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री. जब सारे पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स वर्क करते हैं तभी पूरा सिस्टम बनता है. सो इट बिकेम ए हायरार्की, इट बिकेम ए कंप्लीट सिस्टम. सो इट हैड डिफरेंशिएशन. सारे अलग अलग हैं जातियां अपने आप में, जो अपना जो काम करते हैं, जो खाते हैं, जो जिस तरह रहते हैं, जिस तरह शादी करते हैं, हर एक का अलग अलग है. लेकिन सोसाइटी को बनाने में सारे एकजुट होकर नहीं होंगे, एक कंप्लीट नहीं होंगे, होल नहीं होंगे, सोसाइटी रह नहीं सकता. सो इस कदर पूरी कास्ट सिस्टम डेवलप हुई है. और उसमें देखा हम हायरार्की भी है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बीच में है, इसका उसको धक्का देके नीचे करता है, सब कुछ बन गया है. जब ये सब 18-19 हजार साल में इतना ऊपर बन गए हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन गया है. So, as I said, it denotes occupation, it denotes division of labor. जो सोसाइटी को रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उन कामों को बांट दिया गया है. और कास्ट, हर एक कास्ट अपना एक एक काम करता है. एंड एक कास्ट से दूसरा कास्ट में जा नहीं सकता. जहाँ पैदा हुआ है उसी कास्ट में मरने तक उसी में रहेगा, जो कि 2000 साल पहले नहीं था. ओके. We are not sure about the earliest era to great detail. हम अभी तक जो डिस्कशन हुआ हम पढ़े हैं, लेकिन इतना डिटेल में पता नहीं. लेकिन पिछले 200-300 साल में जो हुआ है उसका तो काफी चीजें अपने पास समक्ष है.
हम पढ़ सकते हैं. All those things have been available for last 200-300 years. We have been able to read, we have been able to go deeper. There are a lot of people who have studied, who have documented. काफी लोगों ने इसको देखा है, परखा है, लिखा है, एंड उसको पढ़ के हमको बाकी काफी कुछ समझ आ जाता है. पिछले 300 साल का, last 300 years of work is documented of how the caste system evolved. पिछले 300 साल में किस तरह हुई है, उसके काफी कुछ किताबें हैं, अवेलेबल है, जो पढ़ सकते हैं. किस तरह हर एक इंस्टीट्यूशन किस तरह पैदा हुई है, किस तरह चाल चलन रहा है, वो सब अवेलेबल है. लेकिन ये सारी किताबें जो लिखी गई हैं पिछले 300, 200 साल, 100 साल पहले, ये नहीं कहती कि आज के तारीख में कैसा होना चाहिए. ये सब उस जमाने का, उस वक्त का लिखित है. All of these are documentation of those times. For example, आज के तारीख में मोबाइल फोन है, 10 साल पहले नहीं था. स्मार्टफोन्स, या मेट्रोस, उस जमाने में, in those days, because of the higher caste, lower caste, and so on and so forth, you must have read, the people of lower caste could not drink water, could not come anywhere close to a well. जिस वेल से, बावड़ी से पानी पीते हैं अपर क्लास वाले, वहां पे लोअर कास्ट वालों को अलाउ ही नहीं किया करते. उस बावड़ी के पास तो आना ही नहीं है. लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 200-300 साल में, टेक्नोलॉजी, हर तरह का जो है ना, गाड़ियां, खाने का, ऑल ये सब जो बदलाव आया है, वो कास्ट सिस्टम में भी बदलाव लाया है. All these changes, shifts, have made significant difference in caste system, how it is observed, how the rules, the strict rules that were there, how much are they being followed, and who is following, कौन अभी भी उसको फॉलो कर रहा है और कौन फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें काफी बदलाव हो चुकी है. Yeah. Any of these practices are neither right nor wrong forever. जो बदलाव आ रहा है, जो भी रूल्स था, वो रूल्स एक वक्त के लिए सही था, दूसरे वक्त के लिए जरूरी नहीं है वैसे ही फॉलो करो. बदलाव आया है. Every age must think. What we are talking in 1950 was different, in 2000 was different, now in 2020s it's different. जिस तरह से सोसाइटी मूव हो रही है और क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये सब उस पे प्रभाव डालती हैं. All of them impact on the thinking process, the behavioral process, and so on and so forth. So it is a collective decision making of the society on the rules and regulations, the social institutions, etc. These things change as the society keeps progressing in positive direction. The system has been undergoing changes, and these changes have been seen, documented by people. We'll talk about few of them. कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले 200 साल से काफ़ी लोग इस पे काम किए हैं, लिखे भी और संघर्ष भी किए हैं लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए. To make lives of many low caste people better. There are people who have fought during the last 200-300 years. We'll look at them. अब हम पिछले 200 साल पे फोकस करेंगे क्योंकि इस पे लिखित है, तो हम 19th सेंचुरी या से फोकस किया जाए, 200 प्लस ईयर्स. सो ब्रिटिशर्स लोगों ने 1800 से 1947 तक उन्हें रूल किए, लिटिल लेस देन 200 ईयर्स. ओके,
they have ruled. But these Britishers, they were from outside and it took a lot of time for them to understand this caste system. जो कि caste system 2700 साल evolve हो चुका है, ये ब्रिटिश आते हैं और इस तरह सिस्टम कहीं भी नहीं है दुनिया में, उसको समझने में उनको बहुत तकलीफ हुई, बिकॉज हर चीज कास्ट सिस्टम के ऊपर ही निर्भर है. कौन काम क्या काम करता है, कहां करता है, कब करता है, कैसे करता है, वो सब कास्ट सिस्टम के निर्भर है. वो ब्रिटिशर्स को ये दिस एलियन, ये उनको तो पता ही नहीं था क्या अच्छा ऐसा भी दुनिया होती है. और उनको इस पर काफी रिसर्च करना पड़ा. दे डिड लॉट ऑफ सर्वेज, विल टॉक अबाउट इट. ओके, सो विल ऑल्सो टॉक अबाउट ब्रिटिश 1947 छोड़ने के बाद जो इंडिपेंडेंस भारत के हाथ में आई तो कैसा विपरीत है, क्या चेंज हुआ है. बिकॉज ब्रिटिशर्स हैड टू रूल इंडिया, उनको भारतवर्ष पे अपना हुक्म चलाना है, वो अपने तरीके अपनाए. वो 150 साल जब भारत के हाथ में आया हुकूमत, अब पूरी बिल्डिंग, पूरा नेशन को बिल्ड करना है, पूरा नेशन को बदलाव लाना है, तो ऑब्वियसली थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग. 1947 के बाद और बदलाव आ गए. किस तरह बदलाव है वो भी देखेंगे. सो पिछले 200 साल कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड रहा, एंड इट फाउंड लॉट ऑफ चेंजेस for some reasons, we'll talk about it. And when India became independent, there are a lot of things that emerged, because we have got to rule our own country, we have got to make our country better, make our society better. So a lot of things changed. So major changes happened during colonial period, through the British period it happened. And इस कास्ट सिस्टम ब्रिटिश रूल के वक्त, see before British lot of things were happening but rarely they got documented, और लकीर का फकीर था थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी नहीं था. अब ब्रिटिशर्स को इस कंट्री पे, भारतवर्ष पर अपना हुकूमत जमाना है, और वो पढ़ने लगे, वो पता लगाने लगे कौन किस तरह के कास्ट होगा, किधर होगा. सो दे ट्राइड टू फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स. बहुत कॉम्प्लेक्स है. अब सोचिए कि जो हम पैदा हुए हैं, मैं 50 साल का हूं तो मुझे इतना समझने में इतना दिक्कत होता है. कोई इस तरह दुनिया में रहा ही नहीं, उसको समझ में कितना दिक्कत हुआ होगा. सो वो they started understanding the complexities. Why do they need to understand? क्यों उनको पता लगाना है? क्योंकि वो पता लगाने पे भी वो बेहतर गवर्निंग कर सकते थे, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे. They could do better only when if they know the details of the population, the caste system, the stratification, and so on and so forth. So what did they do? They started doing methodical surveys. अभी सेंसस हम जो जानते हैं, वो ये सब अपना गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने 1860 में अपना 1800 पे शुरू कर दिया था का सेंसस. पता लगाने पॉपुलेशन, हमने पॉपुलेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि कहाँ पे कितने मर्द रहते हैं, औरत रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, कौन से एरिया में क्या एज ग्रुप ज्यादा रहता है, और कौन सा एरिया में कितने लोग बाहर से आए हैं. ये सब जब उन्होंने सर्वे करना शुरू किया, when they started surveying people by gender, by the age, and by the occupations, and so on and so forth, which they started in 1800, slowly they realized they should be doing more survey on caste, creed, and so on and so forth. So those systems started emerging. So 1860 में सेंसस की शुरुआत हुई, जो अब हम जानते हैं हर 10 साल में होता है. उसकी पहली बार 1860 में हुई थी. ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजों ने अपना गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए
उन्होंने एक सेंसस को स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड इन 1860s. एक जनाब आए हेrbert रिस्ले, 40 साल ये काम चलता रहा. पहली बार 6 साल लगा उनको करने में, उसके बाद से वो 10-10 साल का करते आए. सो हेrbert रिस्ले एक जनाब है जिनका चित्र इधर है. यू कैन सी द पर्सन. Okay, so this Herbert Leslie was the first person to do a survey to document in the survey the complete caste system. Okay, social hierarchy, everything was documented. जब उन्होंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, ये कास्ट उससे ऊपर है, वो कास्ट इससे नीचे है, ये बीच में आता है, ये काम करता है, वो काम करता है नहीं. So when he started documenting, creating his census, lot of people sent their petitions saying that हमारा कास्ट ऊपर होना चाहिए, नहीं हमारा कास्ट इधर होना चाहिए. सो लोगों ने दरख्वास्त देना शुरू कर दिया कि वो, बिकॉज वो पहली बार एक कास्ट सिस्टम को प्रॉपरली टैबुलेशन कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, और उसमें कोई भी अपना मौका छोड़ना नहीं चाहता, तो सब लोग लगे हुए थे. सो पहली बार कास्ट सिस्टम को बकायदा मॉडर्न एरा में 1901 में लिखी गई. बट इससे बहुत प्रॉब्लम भी हो गया. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वंस द काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग इज डन, यू कैन नॉट चेंज योर स्टेटस फॉर एवर. सो एक बार लिखित में आ गया, तुम कुछ भी बदल नहीं सकते. बस तुम्हारा कास्ट और तुम्हारा वंश का कास्ट सब एक बार लिखित हो गया 1901 में. 1901, for the first time the families got completely bracketed because everything got documented in the census. Earlier there were fluidities existing, people still were moving, though हमने देखा पहले 100 years 1000 years में तो कुछ मूवमेंट पे कोई पाबंदी ही नहीं थी. बाद के जो 1,500 साल में थोड़ी बहुत तो थी, मतलब मौका था लोगों को अपना काम के इसके ऊपर इधर से उधर हो सकते थे, वो नहीं. अब सब कुछ लिखित में आ गया है, सो अब कुछ नहीं हो सकता था, बहुत रिजिड हो गया है, लकीर का फकीर और भी कड़क हो गया. ओके, it became strong on the stone, like cast on the stone. Then something else happened. Not only they documented the census, now they wanted to do land revenue settlement. So there is a large land, who owns the land? Because the governance needed to tax them. Okay, so they have to put tax. तो टैक्स तो लगानी पड़ी उनको, क्योंकि अब गवर्नेंस है, उनको पैसा वसूल करना है. अब कौन रहा? Naturally, people of a higher caste who have got higher power, including economic and military power, the Brahmanas, the Kshatriyas and Shudras, these castes started becoming the land owners. अब देखो, इनको स्टेटस मिली है, पावर भी मिली है, वो लैंड ओनर भी बन गए. सो इट क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स. दे ऑल बिकेम लैंड ओनर्स. लैंड मेरे हाथ में, अपने नाम पर काम कर रहे हैं नीची जाति वाले हमारे. पैदा वो करेगा, कष्ट वो उठाएगा, और बोरी भर के मुझे भेजेगा, तो मैं मस्ती में खाऊंगा. सो दैट इज द वे थिंग्स स्टार्टेड. सो देयर वर मिडलमैन. Yeah, I did not manage land. I own the land. There is somebody down there who works on the land, who plows, sows seeds and so on. So there is a farm. And there is a middleman. Neither owns nor plows, but he manages. Because for me to take care, I need somebody to manage. So there is a landowner. There is a middleman to manage. The landowner reports
to the higher caste, who the middlemen report to a higher caste who owns the land but never tills the land. And there are people out there in the land who tills, who cultivates, and this middleman manages the lands. Okay? And simultaneously, large irrigation schemes started coming up. So the British आए, उन्होंने सोचा कि इतना लैंड है, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए. ब्रिटिशर्स ने इंडिया से कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर जो प्रभाव डाला है उन पर, और वो भी एग्रीकल्चर प्रभाव डाले हैं. ओके, अगर आप जानते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन 1913 to 17, the first world war period, Britishers took shiploads and shiploads of agricultural laborers, farmers from India. भारत से ships भर भर के इन्होंने किसानों को जो काम करते हैं उनको भारत से लेके दुनिया के सारे जगह जहाँ ब्रिटिश के राज्य हैं वहाँ पे लेके गए हैं. सो उनको पता है कि यहाँ पर, सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग लार्ज स्कीम्स. फॉर एग्जाम्पल पंजाब में पानी की कमी नहीं थी, तो पंजाब में उपजाऊ के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें की हैं. तो वो क्या किया, उनको काम करने के लिए लोग चाहिए थे, कम थे वहाँ पर जो खेतों में काम करते हैं. तो लोग भारत के अलग अलग जगह से, जब भारत से बाकी दुनिया को लेके जा सकते हैं, तो भारत में बिहार से और यहाँ वहाँ से तो उठा के वहाँ नहीं ले जा सकते. सो पंजाब एक जैसा एग्जाम्पल है जहाँ पे ये खेती का काम बहुत बड़ा रूप ले लिया था और ब्रिटिशर्स ने उस और काम किए हैं, तो इनको वहाँ से यहाँ लेके आए. And this migration also impacted the caste system, because caste system, when people came, the numbers all increased, difference came into being, so lot more happened. When there are lot more mouths to feed, then obviously few more things will emerge. There were certain section of the society which was deprived. They are called depressed class, downtrodden. जो जब बड़े तादाद में लोग पंजाब पहुंचे और काम करने के लिए, ऑब्वियसली इसमें जो पैसे हैं नहीं हैं, तो जो चीजें इमर्ज होंगी उसमें काफी लोग ऐसे थे जो कि काम करते थे, लेकिन उनके पास जो पैसा होना चाहिए था खाने पीने के लिए, रहने के लिए, कम पड़ गई थी, या ऐसा सिचुएशन आया, तो गवर्नमेंट को नया स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ी. सो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड क्रिएटिंग वेलफेयर स्कीम्स. ओके, दैट इज द फर्स्ट टाइम welfare schemes were launched as a part of governance to facilitate people who are in the economically marginal sections of this society. Then came an act in 1935 called Government of India Act. This act changed a lot of things further. What happened in this act? For the first time, a set of lists started emerging. People जिनको इन्होंने स्कीम्स बना के उनको बेहतरी के लिए जो स्कीम्स बनाए हैं वो सब इन लिस्ट में डाल दिए गए हैं. सो एक शेड्यूल लिस्ट बना दिया गया. They have created scheduled list of people, castes and communities which were struggling, which needed help and support for their welfare, their well-being. Those things were documented in this scheduled list. That's where, for the first time, scheduled castes and scheduled tribes, पहली बार 1935 में ये नामकरण आया scheduled caste
एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बिकॉज इनको स्कीम्स के जरिए जो मदद दी जाती थी उसको देने के लिए उन्होंने एक डब्बा टेबल बनाया, और जो जो कास्ट सोसाइटी में कमजोर थी या इकोनॉमिकली कमजोर थी उनको सबको उस डिब्बे में डाल दिया गया और बोल दिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड कास्ट। ट्राइब के बारे में बात करेंगे, अभी तो कास्ट तक ही हम सीमित हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा लिस्ट बनाया था 1935 में। इस लिस्ट में एज मैंने जो पहले कहा था कि आप उसको छू नहीं सकते, आप पानी के पास जा नहीं सकते, कोई ब्राह्मण जा रहा है तो आप दिख नहीं सकते। सो all those things were documented and they found lot of castes that are classified as untouchable. Okay, they all got included in the scheduled castes. Okay. So caste played a big role. When these things emerged, these things started happening as a part of national movement. As a part of national movement, caste played a big role. How did it play a big role? Because Britishers को भगाने में ये caste system बड़ी काम आई, क्योंकि तब तक by then people of different castes for over 150 years, 150 साल तक जो कश्मकश चलती रही, जिस तरह के कुछ लोग कुछ कास्ट पावरफुल होते गए, कास्ट रिसोर्सेज भी पाते गए, कुछ कास्ट काम करती गई लेकिन भूखे मरते रहे। सो ये सब जो हुआ तो काफी बड़े तादाद में लोग नीच वर्ग के या नीच वर्ग जो कहलाने वाले, उनके तकलीफ बहुत हुई। सो ये बहुत तादाद में थे, तो कुछ लोग इनको लेके पावर बना के ब्रिटिश को भगाने की सोच चली आई, सोच पैदा हुई। सो द नेशनल मूवमेंट, हाउ टू ऑर्गेनाइज द डिप्राइव्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास, so that it becomes the mass of the national movement to get rid of British. But this movement दोनों तरफ से हुई। इनको बेहतर बनाने की जो मूवमेंट, डिप्राइव्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास को नेशनल मूवमेंट में लाने की दोनों तरफ से हुई। चंद लोग जो अपर क्लास वाले, जो इनको देख के भुगत रहे हैं, उसको देख के उनको लगा यार क्या हो रहा है सोसाइटी में। सो चंद लोग अपर क्लास वाले जुट पड़े कि इसको इनको बेहतर बनाना है, और जो नीचे जो भुगत रहे हैं वहां से भी निकल पड़े, हम अब ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते, हमको बेहतर बनाना है। ये ब्रिटिशर्स ने ये सब डब्बा डुब्बा डाल के बहुत कुछ कर दिया, सो हमको बेहतर बनना है। सो दोनों तरफ से बाजा बजने लगी, या दोनों तरफ से लोग उमड़ पड़े, फ्रॉम बोथ एंड्स। देयर लॉट ऑफ पर्सनालिटीज एमर्ज, बहुत महान लोग एमर्ज हुए, महात्मा के नाम से कुछ लोग जाने जाते हैं, एमर्ज हुए। एक हैं महात्मा फूले। कौन है महात्मा फूले? ये जनाब है महात्मा फूले। ओके, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ओके, सो व्हाट डिड ही डू? He worked towards securing human rights and social justice of low caste people. जो लो कास्ट के लोग हैं उनको अपना हक दिलाने के लिए ये महात्मा ज्योतिराव फूले, बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा, इन्होंने बहुत संघर्ष की। ये महाराष्ट्र में इनकी संघर्ष जारी थी। जब महाराष्ट्र में कुछ चल रहा था, बाकी जगह भी चल रहा था। One gentleman called Ayankali from Kerala, he was a leader, mass leader of lower caste, Dalits, और इन्होंने उनके लिए संघर्ष किया। Because of him, people got freedom to walk on the same streets as upper caste.
उनकी वजह से लोअर कास्ट वाले उसी रास्ते पे जाने लायक बन गए थे जो कि अपर कास्ट वाले पहले था। मतलब इस रास्ते से तू नहीं जा सकता, यू कैन नॉट गो ऑन दिस रोड, आपके लिए अलग रास्ता बना, वहीं से जाओ, यहां से जा नहीं सकते। और बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता था। सो इन्होंने संघर्ष किया, दोनों को, जो बड़े हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़े क्लास हायर क्लास वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये लोअर कास्ट के बच्चों को स्कूल में एडमिशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो इनका बड़ा हाथ था केरला में अयंकली। और एक जनाब तमिलनाडु में आए, बहुत बड़ा नाम है उनका, रामस्वामी नायकर, पेरियार नाम से वो बड़े जाने जाते हैं। यह दिस जेंटलमैन ट्राइड टू हेल्प, ही वॉज अ लीडर ऑफ लोअर कास्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु। इन्होंने he came out with few slogans. All men are equal. Liberty and equality is birthright of every individual. Yeah? All men are, सारे इंसान एक ही हैं, बराबर है, ऊंच नीच तो हो ही नहीं सकता। लिबर्टी एंड इक्वालिटी सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, सब बराबर है, और स्वेच्छा सबके लिए होनी चाहिए, ये सब इंसान होने के नाते ये होना ही चाहिए। तो ये पेरियार नामक एक जनाब तमिलनाडु में उन्होंने ये मूवमेंट चालू की। केरला में और एक जनाब चले आए, ए स्पिरिचुअल पर्सन, श्री नारायण गुरु। He said there is only one caste, there is only one religion, there is only one God. एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है, और एक ही परमात्मा है, और कोई नहीं है। ये अलग अलग इंसानों ने बनाया है, लेकिन गॉड ने सब एक। सो ये ऐसे लोग, these kinds of people came from many parts of the country. The movements started. Organizing of movements started for emancipation of people who are depressed, downtrodden, marginalized, and lower caste. Okay? ये सब 1920 से पहले वाले हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर इसी मूवमेंट को आगे लेके चले। अनटचेबल या छुआछूत, all those things, they said no, we cannot allow these things to happen in this society. So there were a lot of movements. Dr. Ambedkar is still celebrated, and in fact celebrated to the extent that he becomes the hero whenever elections come, because they want to win. So we'll talk about these things. When India gained independence in 1947, there was a serious thought that we should abolish caste system. या कास्ट सिस्टम को खत्म करना है करके जब भारतवर्ष आजाद हुई, ये सोच था। फिर क्यों नहीं हुई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो खत्म करना ही चाहिए था उस वक्त, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? बिकॉज द इकोनॉमिक डिफरेंसेस, द अपर कास्ट के थे, हायर कास्ट में थे, उनके पास पावर था, उनके पास इकोनॉमिक पावर भी था, सारे पावर उनके हाथ में थे, और इनके पास लोअर कास्ट में कुछ भी नहीं था। अगर खत्म करते तो उनको, लोअर कास्ट में हैं, उनको कैसे ऊपर लाते? तो एक सिस्टम पैदा करनी थी, और उस वजह से एक कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं की गई। While the upliftment of lower castes, they were given messages and a lot of people were working on the movement. अपर कास्ट को भी ये कहा गया है कि तुम्हारे इंटरेस्ट को हम किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो अपर कास्ट तो सारे पावर लेके बैठा हुआ है, उनको कह दिया गया कि तुम चिंता मत करो,
because they had money, they had all resources. Yeah, if they get upset, they create problems. उनको कहा गया तुम चिंता मत करो, तुमको नुकसान नहीं होने वाला है, उन बाकी लोगों को ऊपर लाना है, तुमको नुकसान नहीं होने देंगे. ओके, अगर खत्म करते हैं कास्ट सिस्टम, देन रिसोर्सेस चाहिए होगा उनको ऊपर लाने के लिए. दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज. सो जो खत्म करने की सोच था 1947 में, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड. So there was a different thought emerged in 1947. Obviously, independence आया. Yeah, the nation became independent, so there is a great responsibility on the people who got the power. So सोच तो हुई बदलने की, because अब अपने हाथ में आया तो बहुत कुछ करना पड़ेगा. Okay? So shift तो लेना, सोच में shift तो हुई, लेकिन जो 2000 साल है उससे पीछा नहीं छूट पाए, उसको पीछे नहीं छोड़ पाए. ओके, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को चेयर किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये कास्ट जातिवाद को खत्म करना है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, एक्सप्लिसिटली लिखी गई है, लेकिन कर नहीं पाए. कर नहीं पाए और करना भी नहीं चाह रहे थे. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट. या कास्ट इनइक्वालिटी है, लेकिन पावर एंड मनी इनइक्वालिटीज भी इतना ज्यादा था, तो उसको खत्म करते तो सोसाइटी में हाहाकार मचता. तो वो खत्म नहीं किया उन्होंने. कोशिश की, सोच की कि यार अपर कास्ट को डिस्टर्ब ना करके ये लोअर कास्ट को किस तरह ऊपर लाया जाए, किस तरह रिसोर्सेस को जुटाया जाए ताकि लोअर कास्ट पे खर्च करे, ताकि उनका जो स्टेटस है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, सैनिटेशन, जो चीजें उनके लिए जरूरत है, उनको ऊपर लाने के लिए वो कैसा करें और रिसोर्सेस को कहां से जुटाएं. तो इसकी सोच बनी और उनको किस तरह स्कीम्स हमको लॉन्च करना चाहिए, ये सारा सोच चला आया. इतना आसान नहीं है जो हम सोचते हैं अभी कास्ट है, ये है, उसको इस कास्ट की वजह से मिल गया है. नहीं, ये सब चलता है, लेकिन इतना कुछ हुआ है जब पढ़ते हैं हम लोग, when we read, study about the evolution of caste system in the last 3000 years, in the last 300 years, in the last 100 years, 200 years, we'll get to understand why it is so complex, why this problem cannot be solved that easily. Okay? तो कास्ट ब्लाइंडनेस, अगर कास्ट को अगर नजरअंदाज किया जाए, उसमें जिसके पास प्रिविलेजेस है वो भी तड़पता, जिसके पास नहीं है वो भी तड़पता, जिसके लिए इंस्टीट्यूशंस पैदा हुई हैं. So institutions will struggle, the people will struggle with privileges, all those things would happen. While the new governance of Indian governance took over after independence, in order to take care, because पहले तो ब्रिटिश राज करते थे, ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, हालांकि काफी लोग इंडियंस ही थे वहां पर, लेकिन अब काफी चीजों को खुद के हाथ में लेके करना है, तो नई गवर्नमेंट जॉब्स को क्रिएट करनी पड़ी. ओके, सो गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट किए. ये ओपन रखा गया था, कोई रिजर्वेशन, अब आज के जमाने में हम रिजर्वेशन जानते हैं, all things like reservations and all that we know did not exist then in 1950s. So government jobs, for government jobs के लिए it was open. Everybody could compete, everybody could come up to claim the job. But is it easy? For people जो ऊंची क्लास में हैं, अपर कास्ट लोग हैं, वो तो उनके पास तो रिसोर्सेस हैं, पढ़े लिखे हैं, काफी लोग पढ़ने के लिए इंग्लैंड सब हर जगह दुनिया घूम घाम के आए. सो दे आर हाईली एजुकेटेड. और एक ही गवर्नमेंट जॉब के लिए जो हाईली एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सब संघर्ष कर रहे हैं. तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसा उभरेगा? सो मोस्ट ऑफ द जॉब्स वर टेकन अवे by people who are highly educated from upper classes.
Then slowly reservation came into existence. जब इन्होंने देखा यार क्या हो गई है, लोग जिसके पास ऑलरेडी पावर है, ऑलरेडी पैसा है, वो ही हर जगह घुस रहा है, बाकी लोग उभर नहीं पा रहे हैं, others are not able to grow, then the reservation as a concept came into existence, and they picked up the scheduled caste and scheduled tribe. No, it is a list of castes in a schedule. So that schedule listed in schedules, scheduled castes and scheduled tribes, they started looking at giving reservations to them. But still a lot of things took a lot of time. Yeah. How to bring equality on different sets of upper caste and lower caste. It was still a struggle for an emerging nation. जो नया देश उभर के आया है, उसमें काफी संघर्ष हुई. और क्या हुई? जब लोगों के बारे में देखना है, when you got to understand people, help them to become better, we also need to help the nation to become better. So lot of things came, lot of developmental activities came, private enterprise also came. So government भी invest करती थी development activities में, and private enterprises, organizations, corporates को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आओ हाथ बढ़ाओ कि इस दुनिया को, इस देश को आगे बढ़ाएं, economic activity को आगे बढ़ाएं. Okay. लेकिन जब economic activity आगे बढ़ने लगी, when this economic activity caught pace, when it started intensifying, then obviously we needed more people who are educated to be at the forefront. So obviously even in this developmental space, apart from the government space, even in the developmental activities and private activity, people who had resources, people who are educated are the ones who took away all the bigger part of the cake. Caste rules नहीं थे कहीं पे भी, so people with resources. While this started happening, people started, for example, for people to be in the central government, people from across the country, across various parts of the country, better educated people came and landed in Delhi or in the capitals of the state, okay, to run the state, to make the governance better. Educated people were recruited in the government also, in the developmental activity also, in the private enterprise also. So people started moving to urban areas. When they moved to urban areas, they all started living collectively. For example, if you look at Delhi, there are central areas where the government people were settled. Even today, there are many areas in central Delhi that have government quarters. All of them came and occupied these government quarters, and you don't know who is the next door neighbor, which caste does he belong to. So slowly when people started emerging to urban spaces, slowly the caste system started taking back seat. The segregation got eliminated because there could be a person in the government job in a particular flat or particular house can be a Brahmin, and the next could be somebody at a lower caste or a Kshatriya or a Vaishya or a Shudra or any other caste. People who are able to contribute, they all started congregating in the large cities and towns and capitals and so on and so forth to help the governance. So the interactions across the castes started growing in these urban areas. The walls between the caste system of these collective living started collapsing. And education became priority for their children. Children of people of different castes started going to a particular school. All of them studied from the same school because of the resources, limited availability, best schools, and so on and so forth. So a lot of walls started breaking, especially
people who started settling in the urban areas. While this was happening, the other thing also started happening. कास्ट एक तरफ दीवारें गिर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक कास्ट सिस्टम गहरा हो रहा था. It became more entrenched. How? How did it become more entrenched? For example, मुंबई के टेक्सटाइल मिल्स थे, बंगाल में जूट मिल्स थी. यहां पे काम करने के लिए उनको रिक्रूटमेंट करना है लोगों को. सो जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स थे या जो नौकरों को, मतलब लोअर लेवल जो काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, जबकि कैपिटल्स में, अर्बन प्लेसेस में, दिल्ली में, बाकी राज्यों के जो कैपिटल्स हैं, वहां पे पढ़े लिखे लोग बाकी कंट्री से चले आए. लेकिन जहां पे हाथ से काम करना है, हाथ गंदे करने, वेयर यू गॉट टू सॉइल योर हैंड्स, the recruitments were in the hands of people who were middlemen. So what happened? If a middleman is from a particular caste, he went about recruiting people from his villages, towns, or friends from across the country of that particular caste for the mills, whether textile mills or jute mills. ये सारा रिक्रूटमेंट कास्ट बेस्ड शुरू हो गया, क्योंकि वो अपना अपना बिरादरी के लोगों को पकड़ के ला रहे थे. ओके, सो एक तरफ where educated people needed, where policy making was happening, their things were breaking down, but where people who dirty their hands started moving into these mills, etc., there you suddenly realize the shop floors, yeah, सारे शॉप फ्लोर में एक ही तरह के, एक ही कास्ट के लोग इकट्ठे शुरू हुए, बिकॉज वो उस तरह के लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे थे. या सो देखा गया कि शॉप फ्लोर आफ्टर शॉप फ्लोर एक ही कास्ट के लोग उमड़ उमड़ के आ रहे थे, भर रहे थे. सो जब एक तरफ दीवार गिर रही है, व्हेन वन साइड थिंग्स आर collapsing in terms of the walls between the castes, the other side it started getting entrenched because people from similar castes were congregating on the shop floors, etc., and the intensity though reduced, but the prejudices against caste continued. It's very interesting. The development is happening, the purpose is same, but the things the way they were moving in different directions. While these things are happening in the outside world, बाहरी दुनिया में ये सब चल रहा था, तो घर के प्रांगण में क्या चल रहा था? Very interesting. Though people in the towns and cities who were settling, barriers were getting broken, at homes, in culture and domestic spheres, the caste system did not go away, because the caste system घर पे अभी भी उतना ही स्ट्रांग. घर पे काम करने वाली कहाँ बैठ सकती है, कहाँ उठ सकती है, कौन खाना बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, कौन सा खाना खाएगा, कौन किसके साथ शादी करेगा. या सो मैरिज स्टिल बिकेम, इवन नाउ, आज के तारीख में भी आप देखेंगे दो लोग अगर, आदमी और औरत अगर शादी के लिए साथ आए, दोनों का कास्ट अलग है, तो आज के तारीख में भी बवाल मच जाएगा. पूरे उनके फैमिली में तो होगा, पूरा कम्युनिटी, सोसाइटी सब बोलने लगा ये जाके शमार को पकड़ लाया. सो दैट काइंड ऑफ थिंग एट होम. ऑफिस में दोनों, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों, द लेडी एंड द जेंट, दोनों टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करे, दोनों बगल बगल सीट पे बैठ के कोडिंग कर रहे होंगे, लेकिन शादी नहीं हो सकती है. सो इवन आफ्टर सो मच ऑफ डेवलपमेंट, at home the caste system still became strong. Yeah, boundaries blurred. ऑफिस में तो बाउंड्रीज ब्लर्ड हो गई हैं. Yeah, as I said, people of different caste, ऑफिस में पता ही नहीं हुआ कौन सा कास्ट से है, सब लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन घर में डंडा लेके तैयार हैं चंद लोग
कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कतई मैं करने नहीं दूंगी, कतई मैं होने नहीं दूंगा. Yeah, I will not allow it. So at home, the caste system still is entrenched. अभी भी होता है, कौन खाना पका सकता है, कौन खाना शेयर कर सकता है, कौन खाना खा सकता है, कौन किसका खाना तुम खा सकते हो, किसका खाना तुम नहीं खा सकते हो. घर पे पूछ रहे होंगे कि तुमने किसके डब्बे से खाना खाई आज. So all these things in the culture and domestic spheres, there is still, because I can tell you from my home, from my neighborhood, yeah, those who are 70-year-olds, 80-year-olds, those 50-year-olds as less, those 20-year-olds may not even look at it, but 70 years old, 80-year-olds still look at a lot of things. बाहर जाएंगे, इस रेस्टोरेंट से नहीं खाएंगे. Even when they go to a restaurant, वो पूछेंगे इसमें क्या डाला, क्या नहीं डाला, कौन चलाता है रेस्टोरेंट, ये सब अभी भी पूछी जाती है. And now look at politics. Yeah, did the politics got devoid of these things? No. In fact, politics made things even worse. Yeah, Bharat, the nation got independence, but you got to choose your leaders, and similar to what the leaders did in the national movement, similar things people want to get the power of, they try to amass the lower caste people from some way or other so that they become their vote bank. So this started happening. Caste became central to electoral politics, and it became further complex if people एक ही इलेक्शन में, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर दो अलग अलग कास्ट के लोग लड़ रहे हैं तो वो दो क्या, आज इस जमाने में तो 20-20, 30-30 लोग एक सीट के लड़ते हैं और सबका कास्ट, सो पूरा बंटवारा हो जाता है. द होल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिवाइडेड अलोंग द लाइंस ऑफ कास्ट. So this caste system, instead of getting better, has started worsening. It has become complex. आज के ज़माने में तो in the last 7, 8, 10 years पूरा स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है कि किस तरह हम किस कास्ट को कैसे हमारी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए, किसको कौन सा पार्टी से उठाना चाहिए. This all become a strategy behind electoral. Instead of elimination, the parties in the power or parties in the reckoning, all of them using caste as a vehicle for them to capture the power. So 1980s से ये शुरुआत हुई थी कि कास्ट बेसिस पे पॉलिटिक्स खेलना शुरू हुई थी. आज आप जानते ही हैं कि कहां तक पहुंच गई है. या सब कास्ट कैलकुलस, सब मतलब ये तो चाणक्य है, मतलब हर कोई अपना चाणक्य बन रहा है कास्ट के बेसिस में, कहां किसको जोड़ तोड़ करें ताकि हम अपना इलेक्शन जीते. So things have not become better, they started worsening. So today we covered significant portion of caste and caste system. We have still a lot more left. So what we will do is we will finish the remaining part of the caste system in the next session, along which we will look at tribal communities. Tribal communities is a significant segment of India's population. They are aboriginal, जो असली हकदार इस लैंड के, इस देश के ट्राइबल्स ही हैं. ट्राइबल्स ही अभी हैं कहूँ या थे कहें. ओके, सो वी लुक एट ट्राइबल्स, हाउ वी हैव डोमिनेटेड tribals, how we have changed their face, and so the tribals have gone through a lot of struggles, how development impacted them. ये सब we will look at in the next session. Also we will look at the smallest social institution called family, and see you in the next class. Make sure you go through your textbook,
things that we have covered, and also make sure that you cover all the things we are going to cover in the next session. So your understanding will be faster when I am taking the session. Thank you very much. It's a pleasure talking to you, sharing with you. Hope these sessions are of great value. Make sure whenever you are reading, studying, for example, we looked at social reformers. So they may ask questions. Okay? What was the change or impact Periyar brought, and so on and so forth. So you should know very subtle things, go through the whole chapter and be ready for your MCQs or your tests. Thank you. See you again in the next session.